So I suppose you have enjoyed our short film, a film that was made in 50 hours right from the scratch by just a handful of people who are completely amateur and new to the world of filmmaking. Hi, I'm Shreya Divte. Welcome to No Bracket Bucket and this video where we will be sharing our experience of making our very first short film. So let me start by introducing you to the star performer of our film, none other than my lovely mother, Nilima Divte. Out of all our team members, she was the one whose energy and whose excitement levels were always high, and that was indirectly motivating me throughout this process. And she's also the backbone of No Bracket Bucket. So welcome mama. Thank you Thank वेळ you. काढण्यासाठी. सो कसा होता एक्सपिरियन्स शॉर्ट फिल्म बनवायचा? It was wonderful, something that I always wanted to do. खूप छान वाटलं पण त्या दिवसांमध्ये असं लॉकडाऊनमध्ये लाईफ असं बोर झालं होतं, पण त्या 2-3 दिवसामध्ये तुमच्या लोकांची, तुमच्या टीमची ती पळापळी बघून मलाही त्या पार्टमध्ये एक रोल मिळावा असं वाटत होतं. मिळालं, पण चान्स मिळाला. आणि इथे मला एक मेन्शन करू वाटतं की त्या प्रोसेसमध्ये एडिटिंग करताना एक वेळ अशी होती जेव्हा मला काही सीन्स कट करावे लागले. आणि ते करताना मला खूप वाईट वाटत होतं बिकॉज मम्माने इतकी छान ॲक्टिंग केली होती आणि ती म्हणजे एकदम त्या परफॉर्मन्समध्ये घुसली होती आणि म्हणजे दॅट वॉज व्हेरी इन्स्पायरिंग. आणि त्या क्षणी मी ठरवलं की खास करून हिच्यासाठी मी एक शॉर्ट फिल्म नक्की बनवणार आहे ज्याच्यात ही माझी लीड असणार आहे. सो बी प्रिपेअर्ड फॉर दॅट. नक्की, शुअर. Looking forward to that. Yeah, sure, definitely. I would like to say one thing ki in whatever you do, if you have your parents' support, the energy, the confidence, the motivation, everything just multiplies. So thank you mama and thanks to daddy also for supporting me in whatever I do. Always. And before we shed any tears of happiness, let's just find out what the rest of the team has to say. Hey guys, welcome to No Bracket Bucket and finally हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं. Hi, how are you? Everyone, how are you? We are great, amazing. Hi, amazing. Okay, so Gokul तो मेरे viewers के लिए नया नहीं है. He was there in the last video, my author friend. But you two are new, so let me just give a brief introduction. I'll start with Sanika. Sanika Golatkar, she's my best friend and she's super talented in whatever she does. She's so good and she was a very important part of our team. And Mehul Patel, he's the tech guy. He's the tech guru of our team. अरे So- अरे बस And चलेगा. Gokul Nair, तो आप लोग को पता है, our author who was the screenplay writer for our short film and who did an amazing job with the film. So yeah, welcome. 3 महीने हो चुके हैं हमारे शॉर्ट फिल्म को बना के, बट स्टिल आई डोंट फील लाइक कि आई एम लाइक ओवर विद दैट फीलिंग, दैट जॉय ऑफ मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म. तो इवन आफ्टर 3 months आई कैन टेल कि इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था. तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू नो दैट फ्रॉम यू गाइज कि तुम लोग के लिए ये एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट था. सो विल स्टार्ट विथ मेहुल. व्हाट डू यू हैव टू से? Okay. Alright. So like देखा तो बहुत है कि यार ये करना है but it was the first time for me doing a short film in a short period of time, like 50 hours, like दिन के सिर्फ 50 hours नहीं, दिन रात मिला के. So it was a great amazing experience. So ऐसा live with a skilled writer and a editor and a skilled person who can provide anything at any time whatever you ask for. It was a great amazing experience, I feel. आई एम श्योर यार. मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम लोग, मतलब व्हेन गोकुल सेंड दैट एड टू मी कि श्रेया सी दिस कंपटीशन इज देयर एंड डू यू थिंक वी कैन टेक पार्ट I इन know, दिस, right? आई वाज लाइक कि यार लेने के लिए मतलब पार्ट तो ले सकते हैं, बट आई वाज नॉट श्योर कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं. सो सानिका, व्हाट डू यू थिंक? एज यू ऑल नो, मैं बहुत खराब हूँ फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने, बिल्कुल. और ये 50 यार, आई थॉट कि मेरे को कुछ आता तो नहीं है इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह करने जैसा, बट तुम लोग के साथ करूंगी तो बहुत मजा आएगा, मुझे पता था, जो कि बहुत ज्यादा आया.
Yeah, and Gokul, do you remember कि हम लोग starting में we were discussing कि हम दोनों तो है, but who all should we ask कि कौन आएगा, who I will be know. interested, and honestly मुझे नहीं लगा था कि और कोई आएगा, because you and I we always talk about films, right, and we always wanted to make short films, but when Sanika and Mehul they joined, I was so happy, and मतलब it was an amazing thing कि we had. Amazing, because we never thought, right, that the first time we make a film would be, directly a 50-hour film challenge, and हाँ we'll be Exactly. मतलब working for 50 करेंगे hours तो ऐसे करेंगे continuously. कि कभी नहीं किया. It's हाँ, like that. Directs are 50 hours पे. मुझे तो मतलब ऐसे लगा था कि ठीक है पार्ट तो ले सकते हैं, होगी नहीं होगी बाद में देखेंगे, बट वी एक्चुअली फिनिश्ड इट. Yeah, we did. Yeah, and I would like On to tell, time. yeah, I would On like to time. tell this to the viewers ki our deadline was 10 p.m. and we submitted that film by 9:57. इतना on the edge था. I know. So yeah, okay. So I had this question for Gokul कि हम लोग को Friday 8 p.m. was our starting point. तो Yeah, that yeah. time they gave us the theme. The theme was stop at nothing. तो हम तीनों ने तो डिसाइड किया था कि that is purely your like pre-production part, that's on your shoulders, and we were completely like हम लोगों ने दे दिया था कि तेरा काम है, you will do it best, we were not going to interfere. तो I want to ask कि जैसे थीम सुना तो तेरे दिमाग में क्या आया, like Once I saw the theme, then remember they asked for we had different categories, right? Drama and all the biography and all. mobile, First challenge was amateur to and decide. professional. Yeah, Professional. No, we no, were, अपना वो And he's talking this about ray the category drama, biography, yeah, and yeah, all that. John That asked that genre. the Genre genre he's was talking asked, about. na. hmm. So पहले तो we had to decide which one to stick to. So because of that, we first remember we all searched for topics regarding we can make a biography and all. Our So after doing options for us were drama, biopic, and biography, thriller. biopic, Comedy, I guess. humor, हाँ, humor, yeah, Humor. right. humor, or yeah. Yeah, it So was humor. Yeah. these were the topics. So then we first searched through biography and all, but then we were not getting strong biography cases because we were COVID times, and the more biggest challenge for us was we all were in different places. So we Yeah, had to decide a exactly. we had to decide a story based on Sorry that. to That was interrupt the here. biggest 1 minute. challenge. I'll just interrupt you here. I would like to tell this to the viewers कि we have stuck to recording this interview नहीं, this chat session like this or over the video call because we wanted to keep it as close to as we made the film. We have made the film on over these Google Meet calls for the 50 hours, and I'm so proud that अलग अलग जगह पे होके भी over these Google Meet calls we made a short film. That's another achievement, I feel. Okay, go ahead. Sorry. That was amazing. So then after that, the minute the thing was out at 8 o'clock, then it was back to back in 1 hour's time a discussion, then 1.5 hour time again discussion. That is how we actually could do it because we had needed to do it continuously to gain to make it. That was That's what. actually the biggest challenge. Gokul, how do you like? Why did you choose drama over the other two genres? Like, why did we not do biopic or humor? So इसके पीछे Okay, कोई thought yeah, process है? humor. We omitted humor in the beginning itself because we had a time constraint, right? We had only 6 minutes to make a total video could be only 6 minutes, and to make a humor video that will involve a lot of dialogues and all, which will chunk out a large time span. So इसलिए humor we removed it because of the time constraint. And biopic problem was because of the COVID time we had a restriction. We could not go out and shoot, and we all were in different places. So इसलिए we needed something. And when we checked for biopic, everything required a lot of setup and pre decisions and all that. So उसके वजह से we decided to go for drama because now we have that flexibility now to make it Right. as per our convenience. So that's why we stuck to drama. Okay. So then यहाँ पे I would like to mention this thing कि the
क्या था, IFP, India Film Project, this platform who had arranged this competition, they were constantly sending us the text messages. Do you remember that? Text B or mail B. It wasn't just for the Maybe text, it was mail हाँ, also. 8 hours left. and those Right. messages were adding to our anxiety. They were like कि यार मतलब 20 hours left, 25 hours left, we got our first film, what are you doing? हाँ, जो deadline का जो like the anxiety and the sleepless night thing, it हाँ. didn't affect us, but the submission part did affect us. That the timing part, whenever they used to send na 20 hours left, 15 hours left, 10 hours left, what you are doing? We got the first film. What you are doing? अरे, we are giving it. Don't give us the pressure like that. But it gave me the vibes of doing our submissions, the architectural हाँ. submissions. Exactly, वो एकदम वो वाली feeling आई one night हाँ. before the submission. I know. And okay, let's move on to the production part. तब we got our 2 stars. Actually, all 4 of us, we have acted in the film. If you haven't checked out the film yet, I have posted that video too. Go and check out. I'll put a link to that in the description below. So yeah, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा. All 4 of us, we have also acted in the film. And तो हम लोग का scene जब था, the 3 of us, we were talking on the phone. तब तुम लोग के मन में क्या चल रहा था? What was going on in your mind? सानिका and Mehul. सानिका. मुझे honestly सही में आके मिलना था। हाँ, actually that line was कि मिलके बात करते हैं. ये लाइन था अपना. या मिलके बात करते हैं लाइक कि यार फिर उसके बाद सही में मिलेगा कि नहीं कि यार चलो साथ में कर लेते शूट, बट ठीक है, बट बहुत मजा आया था. For me, it was a task क्योंकि हम लोग को ये बताना था, वो फोन पे तो बोल दिया कि हाँ मिलके बात करते हैं, but जब when we were shooting it कि हाँ we are literally sitting at a place and we are talking to each other in person to person and creating the backgrounds like it is the same place, it was a task I feel. But for 3 of us staying at a different place, shooting with a different camera, giving a proper similar kind of a quality is bit difficult. But we did it. We did it at a good timing, and we had to create a scene where we are looking at each other. Yeah, and that's what the angle, the way we see each other. And we must say this: our screenplay writer, he turned into a director for that particular scene. Yeah, I know, right? And पूरा 50 घंटे continuously we were on the calls. And मतलब कुछ भी होता था, अरे ये मेरे पास है, अरे मेरे को ये चाहिए, okay, I have sent you. ये ढूंढ के दे, वो ढूंढ के दे, ये गाना चाहिए, ये गाना मजा नहीं आ रहा है बैकग्राउंड. If somebody is doing something, the others would do this other work which we have to put in the next day. Yeah, we were always working, whether it was direct practically or not. हम लोग connected, मतलब साथ में नहीं थे, but I was like कि बस बोल रही थी कि मेहुल मेरे को ये चाहिए, and मुझे रिप्लाई आता था कि भेज दिया है, मेल चेक कर ले. So इतना हम लोग continuous Google Meet पे थे. I'm not promoting Google, but yeah, kind of. Yeah, so as you mentioned, music, background score. तो उसका कैसे तुम लोगों ने ढूंढा? Right, जब start Suitable किया था, music. Yeah, so of course screen अपने क्या बोलते हैं डायरेक्टर कम द स्टोरी राइटर, उनसे बात करके उनको पूछा कि कैसे गाने चाहिए. तो like we were not disturbing Shreya at all because she was busy editing whatever we have shooted. तो वो उसमें तो हमको चाहिए नहीं था कि वो हमारे साथ आए और वो गाने में भी सोचे. अरे he had so much to do. I'll tell about my experience later. तुम लोग बोलो. Then me, Gokul and Sanika were like, okay, तो अभी गाने चाहिए. तो we were like, एक तो गाने चाहिए जिसमें हम लोग को ऐसे गाने चाहिए जो हमारे स्टोरी के साथ जाए, और उसके भी 4-5 ऑप्शन चाहिए सिर्फ एक सीन के लिए. तो उसमें भी हम लोग सब ने अलग अलग साइड ढूंढ के, we gave Sanika searches out some song, me searching out some song, mailing it to Gokul listening it to it, Gokul listening it like मजा नहीं आया, दूसरा कुछ लाओ. Then we are going back, we are searching some other song, coming back. अच्छा था. Because background score, हाँ सानिका. मैं कंटिन्यूअसली मेहुल को पूछ रही थी कि मेहुल तू बता यार ये गाना जा रहा है क्या उसके साथ, क्योंकि मैं भी एक पॉइंट के बाद कंफ्यूज हो गई सब म्यूजिक में. Because background score is a very important part of any film, any video, because it can either make the video or just break it, because इतना impact होता है music का. It has to flow with the story. So yeah, and the next part is post production, जिसका पूरा मैंने मतलब try किया करने का.
I would like to say कि मुझे जब मैं editing कर रही थी, I knew every clip I was editing, मुझे पता था कि इस सीन में ना ये गलत हो रहा है, इस सीन में यहाँ पे हम बेटर कर सकते थे, यहाँ पे वॉइस थोड़ा और अच्छा आना चाहिए था, बट we didn't have had that time कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि वापस करते हैं, let's just reshoot, retake this, and in spite of knowing all these corrections, drawbacks. corrections, and we had to submit the film as it is. तो मैंने पूरी editing ऐसे ही करी है कि मुझे पता है कि इसमें ये गलत है, but I can't help it. I had to just keep on doing, and yeah, the post production part was a bit नहीं, उसमें बहुत भी ज्यादा hectic था. we can't forget the हाँ, subtitle the part. subtitle, Sanika, oh my god, Yeah, that's Sanika, what. you were How can you so forget the fast. subtitles? And मतलब हम लोग को लगा कि नहीं हो जाएगा, and then कैसे We 8 thought it was बजे, auto generation. हाँ, we thought We it was actually thought it was auto auto generated. generation. I mean, she typed it all down. I know, Yeah. right? It was a hectic So job. in short, यही What था time? कि all 4 of us, we were confident with what we were going to do. अपन ने अपना एक field choose कर लिया था, but उसमें भी we were not like experts. Like मेरा तो I'm trying only. Expert शायद सिर्फ गोकुल रहेगा with the story writing and But this is my first author time. part. Yeah, But the film के लिए screenwriting, formatting and all, it was very this. And it's only when you start doing the production, we realize ki, what you write in the script and then how much it has to be changed because of the different situations that we are in. But definitely, it was we have to start somewhere. So there were few more members of our team, unofficial members बुला सकते हैं उनको, who were working for us, from their own homes. So I would like to mention their names. Let's start with the 2 DOPs जिनको हम बोल सकते हैं DOPs, that are my little brother and Gokul's little sister, Devika Nair and Harsh Dipte. And also we cannot forget about our dialogue writer who who I don't know how he managed. उसको बस कॉल कर दिया मैंने, Nath Gadkar, by the way his name is. I just called him up and सुन मेरे को डायलॉग चाहिए, मतलब ऐसा सिचुएशन है, ऐसा स्टोरी है. मैंने उसको समझाया एंड मैंने बोला तू कुछ भी कर, बस मेरे को 2-4 अच्छे मतलब एकदम फील होने वाले ऐसे डायलॉग्स चाहिए, शायरी जैसे. एंड इतना पढ़ता है तू, बुक्स पढ़ता है, तेरे से हो जाना चाहिए. तू, मैं ना सुनने के इसमें थी नहीं, बिकॉज दोस 50 hours I was like नहीं, मेरे को चाहिए, I want to get this done. And he was like yeah, I will try my best. And then after, like he gave those dialogues, and those dialogues were बहुत ही अच्छा लिखा था उसने. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने कम टाइम में उसने इतना अच्छा लिखा. वही वो था but वो नहीं था. It was like that. Exactly. Like he was there but he was not there. Exactly. It was always like कि मैं हूँ, तुम डरो मत, मेरा हाथ तुम लोग के मतलब पीछे. anything that we 4 couldn't do, we were asking him to do. So yeah, it was amazing. And of course my parents and my family who also acted in the film and who were also tolerating me and my tantrums for those 50 hours because I had completely lost my mind. So yeah, these people who have taken part unofficially, इनका भी उतना ही contribution रहा है. So yeah, kudos to them too. या सोचते यार, तेरे को वो भी याद है कि अपन जब एडिट कर रहे थे तो वो 6 मिनट्स का नहीं 8 मिनट्स का वीडियो हो गया था. फिर उसको अपने को शॉर्ट करना पड़ा थोड़ा. I know. And एक मतलब किसी भी स्टोरी का, Gokul must be knowing this, कि you have to first introduce that a problem, a situation, then you have to address that situation, and then you have to like resolve that, right? I'm correct ना, Gokul? ऐसे ही होता है शायद किसी हर स्टोरी का. या तो 6 मिनट्स में उतना सब दिखाना फॉर अ बिगिनर वाज वेरी डिफिकल्ट. तो हम लोगों ने बिंदास, लाइक तूने स्टोरी स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले लिखा and we all followed that. We shot all the scenes, we edited, and मेरा ध्यान ही नहीं था टाइमर के ऊपर कि कितना टाइम हुआ. and while exporting मैंने देखा कि भाई ये तो 8 मिनट का हो गया. हम लोग को मिनिमम 6 मिनट्स करना था. तो अगेन द नेक्स्ट चैलेंज वाज कि उसमें से जितना अनवांटेड था
जो स्टोरी को अफेक्ट किए बिना मैं हटा सकती थी उतना मुझे हटाना पड़ा, एंड दैट वाज अनदर टफ थिंग दैट आई हैड टू डू, बट इवेंचुअली You हो also गया। have to add that credits भी डालने थे ना अपने को स्टार्टिंग में हाँ, और एंड क्रेडिट्स, एंड Yeah, क्रेडिट्स। so अलग टाइमिंग था। एंड उनका वीडियो स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में हाँ IFP का IFP का उसका लोगो तो टू बनता था। मेनी फॉर्मेलिटीज। बट इमेजिन ना ये जो वीडियो अपन ने बनाया अलग अलग जगह पे रह के, वो अगर अपन साथ में होके करते I जो know. कोविड का सीन नहीं हम होता लोग को Exactly. रिस्ट्रिक्शंस थे ना, लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस थे। अगर शायद लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते तो वी माइट हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड एडिटिंग थोड़ा हम लोग डिवाइड कर पाते हैं। लाइक एडिटिंग का Exactly. अकेले ही श्रेया पे आया, अगर वो I'm चाहता coming तो to We that. have to, we have to do the we'll talk maximum it later. acting scenes also. We हाँ, have to do the maximum acting scenes plus the editing. reason was सब कि एक साथ मैं मिलके अगर डायरेक्ट कर रही हूँ, मतलब I don't even know what exactly the job of a director is, but मैं अगर मतलब लीड कर रही हूँ किसी भी टास्क को, तो उसमें किसी को अगर बताना होगा मुझे, तो I have to be physically like be present with that person. तो इसीलिए मैंने सोचा कि what if I only act as the lead, so it will be easy for me, and then I was only going to edit, and then I was only going to direct. So this is one thing that I've learned in this entire experience ki from this entire experience ki you can't do everything all by yourself, you have to trust people. I had you three, मतलब तुम लोग का तो डाउट नहीं था, I trust you guys, but हम लोग को ना थैंक यू स्टार्टिंग बताने के लिए। में of course I do, हम हाँ, लोग थोड़ी देर को पहले से डरा रही थी कि मेरे को भरोसा नहीं लोगों पे, एंड एकदम से लाइक हाँ आई ट्रस्ट यू थ्री, अभी है यहाँ नहीं, पे तो अभी क्या but करें। that's what I'm saying, that is the lesson that I've learned कि हम लोग को स्टार्टिंग में we should have asked more people. I know मैं थोड़ा थोड़ा सा घबरा रही थी पूछने के लिए लोगों को, बिकॉज घबरा नहीं रही थी, बट आई वाज लाइक डाउटफुल कि वो लोग आएंगे नहीं आएंगे, फिर हाउ एफिशिएंटली दे विल वर्क फॉर द टीम। तुम तीनों को पता था लाइक यू आर इंटरेस्टेड तो यू विल डू इट, बट वही दैट्स द थिंग आई हैव लर्नड कि यू हैव टू trust others, you have to take chances, because you all you can't do by yourself, you have to trust others. Yeah. So what is the one thing that you have learned from this experience, Gokul? What I learned is basically this short film was necessary for us to realize our mistakes, and I'm sure this time, next time when we make and we are going to be physically present, we are going to make a much better short film with making or not making any more mistakes like the ones which we made. So this We'll was a make new necessary stepping mistakes. stone. Yeah, we'll make, but it's important to Won't. realize it. Yeah, right. Tanika, what about you? और मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही नया था मेरे लिए। मतलब मैं इस सब में मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब वीडियोस बनाना इस सब में ज्यादा हुई नहीं, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और आई होप अपन और भी करेंगे ऐसे Of वीडियो। course करेंगे यार, can't wait. And Mehul, what have you learned from this experience? So like अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ ना तो इट इज अ वेरी बिग लाइक वास्ट थिंग। लाइक जब पहली बार ये पोस्टर सामने आया, ग्रुप में पोस्टर आता है, हम लोग पोस्टर देख के लाइक करना तो चाहिए ना, नेक्स्ट डे ये करते हैं, लाइक तू करेगा क्या? लाइक हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं, पक्का ना पैकआउट नहीं करेगा ना? नहीं करेंगे हम लोग। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। लाइक पता था कि सबके लिए पहली बार ही है, and it will be a great experience at any cost. And the main task was like we are at a different place, shooting at a different location, doing it in a different manner, and doing it in 50 hours. It was a great task, and वही मजा आ रहा था। एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, मतलब मैंने एक्टिंग कर ली, मैंने डिसाइड कर लिया बड़े कॉन्फिडेंस में कि मैं कर लूंगी वगैरह, बट हैप्पी सीन्स एंड ऑल इज फाइन, नॉर्मल सीन्स रहते हैं तब तक ठीक है, बट when I had to play the difficult part, which was कि जब मैं I have hallucinations and वगैरह वगैरह, तो all of that was so difficult. Acting is so damn difficult. I've realized this one thing. It was very difficult for me also. Even that small bit which I played, very difficult for me to even do that thoda sa uska na. And
And another thing which I learned, especially this time, was the importance of the way you used to tell us where to place the camera and all. The impact of where you place the camera and all, that was very new That's to what me. मैं अभी I वही never बात have करने वाला था. I never thought of it in such a way, but it was something new, completely new. Yeah. कैमरास भी glad इवन we ऐसे did रखे थे, लाइक ट्राइपॉड तो हम में सिर्फ एक श्रेया के पास ही है. हाँ. हमारे Books ट्राइपॉड थे हमारे हमारे बुक्स पास. ट्राइपॉड मेरे पास मेरे भी नहीं पास था. था, मेरे पास भी नहीं था मेरा अपने ट्राइपॉड. मेरे पास था ट्राइपॉड इसका. ओके, जिसका सबसे कम रोल था उसके पास ट्राइपॉड था, जिसका सबसे ज्यादा रोल था वो लोग ट्राइपॉड के बिना हाँ. अपने बुक से पाउच में रख के लाइट एडजस्ट करके शूट कर रहे हैं. One thing कि it was a competition, right? Winners निकलने वाले थे, top 5 निकले, and we knew कि अपना first time है, ठीक है, ज़्यादा hopes नहीं रखते, but we didn't even give up on the hopes, ठीक है. I remember us like after submitting the video, we were like कि we were concluding the entire process of making a film, and we were talking about कि यार अच्छी बनी यार, मतलब खुश थे अपन सब. We were satisfied with what we had made. या एक चीज अच्छी है हम चारों की, हम चारों का मेल पे ध्यान था. जो भी मेल आ रहे थे हम चारों भी देख रहे, चारों ही एक दूसरे को बता रहे, अरे ये मेल आया तूने देखा कि हाँ मैंने भी देखा. अच्छा फिर कौन कर रहा है. We used to divide the work and we used to start working आगे. लाइक वो जो कोऑर्डिनेशन जो आ रहा था ना हम चारों में, उसने ही हमारा 50 घंटे का मूवी एक जल्दी करके दिया. और एक लाइक ऐसा जो एक्सपीरियंस हम लोग को, टायर्डनेस नहीं यार, इट वाज फन. और जैसे 3 दिन खत्म हो गए उसके बाद ऐसा फील करता है यार आज भी वीडियो कॉल आज और थोड़ा होता. आज भी थोड़ा वीडियो कॉल करके ऐसा कुछ मिले. सोचना मतलब अपन गूगल मीट पे थे तब इतना मजा आया, तो अपन जब ऑन फील्ड सच में ऑन ग्राउंड होते तो कितना मजा करते हम लोग. सच में करेंगे यार, करेंगे ऑफ कोर्स. अगले साल पक्का करेंगे. तो उसके पहले भी बहुत कुछ करेंगे. हाँ ऑफ कोर्स यार, मतलब अभी हम लोग को वो कॉन्फिडेंस आ गया कि 50 घंटे में इतना कर सकते हैं. अच्छा, तो जब अगर टाइम लिमिट नहीं होगा तो we can do wonders. And without all these constraints, and also imagine you can do so much. Without the IFP all the messages. resources also. No. Resources भी अच्छे होंगे हमारे पास. We actually made all this in one room. Everybody's individual one room में बैठ के we made all this. Imagine when we all are together. ऐसा 3 दिन कंटिन्यूस एक रूम में ही बैठे, खाना वही रूम में, पीना वही रूम, तो सब. So as I was saying, the when we watch the award shows, what I realized is there were some sort of from which we could learn something. There were things about the editing which inspired us to work better, and there were some which after watching we felt even we had a chance to actually come, like maybe before in that mobile category we actually had a chance. We had a strong fight against all these people in terms of our work and our quality in those 50 hours. इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, अगर हम लोग बोले तो मुझे पार्टिसिपेंट्स भी पसंद नहीं है. मतलब पार्टिसिपेंट्स इन द सेंस उनका काम पसंद नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं. पार्टिसिपेंट्स कैसा था जिनकी एक लेवल अलग है, फिर वही लोग एमेचर्स में कॉम्पीट करेंगे. Exactly. हम एमेचर्स क्या करेंगे? Exactly. मुझे भी वही लगा कि there was that exactly कि वो लोग professionals थे and they registered for the mobile category, and obviously उनका तो अच्छा होगा ही ना compared to other mobile category films. So yeah, they should be strict about that too next time. क्योंकि हम लोग पहली बार है, and this is what we feel. हम लोग क्रिटिसाइज किसको भी नहीं कर रहे, हम ना हमको IFP से कोई प्रॉब्लम है. हम लोग सिर्फ इतना क्लियरली, हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस है, द वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड, राइट? तो अगर कोई देख भी रहा है उनमें से तो प्लीज देयर इज नो ऑफेंस टू यू, वी रियली एंजॉयड इट, टू बी ऑन अ क्लियर नोट, राइट? क्योंकि फिर सी एट द पॉइंट इट वाज अ एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इंप्रूव, IFP. IFP knows. And what we are, and everybody is subjected to their own opinion, no? So this is just one of those opinions. Yes. Okay. I think if we just keep on talking about it, it will just go on and on. क्योंकि हम लोग का मन नहीं भरने वाला. हम लोग 50 घंटे इसके ऊपर बात भी कर सकते हैं. So let's end this video here, and again I would like to tell all of you कि if you haven't yet watched our film, our short film, our very first short film, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, which was one important thing is उसको team नहीं, हम effort. सबको भी सिखाया.
Yeah. ये सबको भी सिखाया, वो अकेले ने नहीं Team सिखाया, effort. प्लीज। Yeah. भूल जाती है ना श्रेया। हाँ. Okay, so yeah, team effort जो मैंने बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल था टीम एफर्ट का, ये मेरे लिए मेरे लाइफ में बहुत सीखा है सच में. एंड या सो गो एंड चेक दैट फिल्म आउट एंड वॉच दिस वीडियो अगेन इफ यू वांट टू रिलेट टू व्हाट वी हैव जस्ट सेड. Yeah, so click on the link in the description below and yeah, let me know. And So subscribe to this, what it is, कौन सा bucket, कौन सा oh bucket, oh कैसा bucket? no bracket bucket. Yeah, it's Yeah, guys, please do नया subscribe. चाहिए, अगर तुम लोगों को कुछ नया चाहिए, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करनी, just go subscribe it and just watch it. अहो भाग्य हमारे, आपने ऐसे हाँ, बोला. धन्यवाद। थैंक यू, बाय, सी यू सून. मिल के और शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे. Bye. विल रॉक Definitely. दिस फील्ड टू एंड सी यू सून.